So now we're going to see the open source development model. Okay. So in open source development model, we're going to see the cycle of open source development model and what is the open source development model. Open source. You already study about what is the mean by open source, right? So now we're going to see the open source development model. Okay. So today's concept is about open source development model. So just 1 minute. Okay, now it's perfect. Okay, so here the open source development model, you can say that the development is distributed among multiple teams. So first of all, I want to say that कि अगर कोई भी model या कोई भी project पे we have just 1 minute. ओके सो कोई भी ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल अभी फर्स्ट द ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल दैट डेवलपमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल टीम्स अभी कोई भी प्रोजेक्ट पे जब हम वर्क करते हैं तो वो टीम वाइज होता है राइट इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट एनी प्रोजेक्ट फॉर दैट पर्पस यू रिक्वायर द बेस्ट टीम लाइक वी आर वर्किंग इन या वी आर स्टडिंग इन टेक्निकल फील्ड यू आर इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स सो हम लोग ऑफ कोर्स वी विल सी इन आवर सेक्टर्स कि हम लोग क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं लाइक जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाना हो उसके लिए वी रिक्वायर द कोडिंग टीम मीन्स डेवलपमेंट टीम प्रोग्रामर वी रिक्वायर लाइक programmer we require here right then we require programmer can do program like coding and all then we require designer just 1 minute then we require testing team so many phases are there to do just minute to do project we मतलब हम लोग we require many phases the cycles of development team we will see in, after this. Okay, the open source development model that development team is distributed among multiple teams working in different location in a field structure that is new arrivals of departure means success open source communication have development process where code can be submitted अभी जैसे कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है देन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टीम प्रोग्रामर कैन डू देयर प्रोग्राम्स देन डिजाइनर कैन डिजाइन द प्रोजेक्ट्स मतलब किस चीज का प्रोजेक्ट उसको की क्या क्या चीज की डिजाइन रिक्वायरमेंट है डिजाइनर कैन हैंडल दिस देन टेस्टर आफ्टर प्रोग्राम कोडिंग टेस्ट डिजाइन एंड वॉट एवर फेज जो भी होगी बीच में वो सारा टेस्टिंग थ्रू पास होगा राइट टेस्टर कैन टेस्टिंग द प्रोजेक्ट इज गुड और नॉट एरर्स आर देयर और नॉट बग्स आर देयर मतलब फाइनल होने के बाद भी लास्ट स्टेज होती है टेस्टिंग की आफ्टर दिस वो फाइनलाइज होता है देन इट विल कम इन आवर मार्केट ओके सो इसके लिए हम लोगों को टीम्स की रिक्वायरमेंट होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डू a big huge project for that purpose we require the team members okay so successful open source communicates have developed process where code can be submitted and integrate मतलब code integrate होता है then communication is well documented and features are integrated in small increment to catch issue early in the development cycle. One of the core characteristics of the open source development model is that individual or small team of contributors are responsible for development and maintenance of code. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, right? Contribute features are integrated into single body of code by one or more maintainers who sure newly submitted code meets the over version and standard set फॉर द प्रोजेक्ट अभी किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोगों को डिजाइन के बेस पे जो कोडिंग करनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि एक पेज कोडिंग इज इनफ नो वी रिक्वायर द मींस जिस चीज की डिजाइनिंग होने वाली है राइट एग्जांपल हम लोगों को मशीन बनानी सपोज राइट तो उसकी अगर हम लोगों को कोडिंग करनी है तो मशीन का लीड की कोडिंग कोई और करेगा देन वन साइड बॉक्स की कोडिंग कोई और करेगा मतलब जो भी पार्ट्स हो गए एग्जांपल वॉशिंग मशीन है जो भी लो आप मशीन का तो पर्टिकुलर बेस पार्ट्स की कोडिंग अलग अलग
पर्सन करेंगे और मतलब डेवलपर्स ये सब प्रोग्रामर्स के अंडर आएगा एंड उसके फाइनल उसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट डिजाइन प्रोग्रामिंग के बाद वो उस कोडिंग के बेस पे डिजाइन करेंगे, डिजाइन के बेस पे वो लोग कोडिंग करेंगे, राइट। और ये सारा इंटीग्रेट होके टेस्ट होगा। ओके, तो इसके लिए डिफरेंट टीम्स भी रिक्वायर्ड है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल इसके में ये सब होता है। ओके, द फ्यूचर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट इज अ being with an idea for new project futures to enhance which purpose to other project developers following further. When the new futures compiles and runs, it is typically distributed within. Let me increase the volume. Okay. The purpose of early distribution is to collect feedback. Yeah, to develop the project, first of all, you require the feedback. Yeah, matlab after when you go, send to the market this project, then you require the feedback. उस feedback के through आपका project किस type का है, quality of this project depend करती है, right? But first of all, मतलब जब हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए इनिशियल फेज होती है उसको डिजाइन करना मैन्युअली, मींस राइटिंग पर्पस में या ड्राइंग पर्पस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मतलब उसको मैन्युअली कहते हैं। ओके, मैन्युअली पर्पस में हम लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाना होता है। देन वी फिर हम लोगों को उसको पार्टीशन करना होता है। देन कि कौन सी टीम में कौन हाउ मच टीम वी रिक्वायर फॉर दैट फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के ऊपर उस टीम के बेस पर हम लोग डिवाइडेशन करते कि कोडिंग में कितने बंदे लगेंगे, मतलब पर्सन लगेंगे, डिजाइनिंग पर्पस के लिए हाँ पीपल्स कितने लगेंगे, टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए क्या वो होगी प्रोसेस होगी। ओके, the purpose of early distribution to collect feedback and allow user to test and provide input. This is the commonly called release early and often. User may provide feedback, bug reports and fixes which are integrated into the next development release. The cycle repeats until the developers feel that implementation is stable enough to submit for inclusion into the main project. The author of code then submitted the code to the project maintainers over the project mailing list. The maintainers determine whether the code should be accepted into the development tree or written for revision. Some projects may have multiple layers of maintenance depending on when the code has been signed off by relevant maintenance. It is the includes into the project main source free for publishing in the next release. Open source features lifecycle, feature request process. Feature requests are generally tracked and prioritized using process that are visible to the rest of development community. This shows a common understanding of which features have been requested, their relevant priorities, their development status, associate bugs and blockers, and when they are planned for release. So the typical process used to Okay, see this. The typical process used to ensure that future requests are actually tracked, developed, and released. So in this, you can see the cycle, life cycle in the open source development model. जैसे कि मैंने आपको कहा कि particular project develop करने के लिए we require the programmers, designer, we require implementation, then testing, maintenance, whatever most of the points we require. Okay. So future requests may be with purpose to mailing list or discuss in IRC or as a future request in a project as bugs. So future request. Okay, this first point is future request is submitted by developers and user. Developers and user में future request submitted होती है. Then architecture and design discussion. फिर आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा मैन्युअली हम लोगों को फर्स्ट आर्किटेक्चर बनाना होता है, डिस्कशन करना होता है, राइट। देन इम्प्लीमेंटेशन ये कोडिंग के अंडर आएंगी, मतलब कोडिंग जिसके हमें प्रोग्रामर लगता है उसके लिए। आफ्टर डिजाइनिंग देन मैन्युअली डिजाइन करके पेपर में हम डिजाइन करने के बाद वी वांट टू implement in software ways, right? So implementation like मतलब coding करना उस पर। then deployment मतलब release, maintenance, then patches here there, right? इसमें मतलब क्या है, submitted by developers and users, then contribution, testing and integration, then test project to automate testing and validation. So the request is typically made by whoever is likely to lead the implementation work. The purpose of the request is to notify other of the need, then again acceptance for the idea and come to consume on next steps.
project contribution and maintenance. The evaluate the request and determine whether it should be candidate for a future release, right? मतलब प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में उसका क्या यूज है, कैसे पीपल्स कैन बाय दिस प्रोजेक्ट, राइट? हम लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो सेल पर्पस के लिए बनाते हैं, मार्केटिंग ऑन डिमांड और मार्केटिंग, राइट? देयर विल बी ऑफन द डिस्कशन बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड डेवलपमेंट, मतलब मार्केट में किसकी रिक्वेस्ट ज्यादा चल रही है, किसकी डिमांड चल रही है, उसके बेस पे वी कैन डेवलपर टीम कैन मेक द प्रोजेक्ट। डेवलपर मीन्स डेवलपर डिजाइनर व्हाट ऑल टीम्स। There will be often discussion between the request and development community to clarify needs and requirements. If the request is approved, a target release will be set and development begins. आर्किटेक्चर एंड डिजाइन डिस्कशन हियर सेकंड वन इज फ्यूचर रिक्वेस्ट मींस आपको समझ में आया कि मार्केट में किसकी डिमांड की, उसके बेस पे हम वी कैन मतलब अपडेट बेस पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन डिस्कशन, अब इसमें कैसे हमने देखा था कि वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू सक्सेस ऑफ द ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल। अगर विदाउट आर्किटेक्चर, विदाउट मतलब पेपर वर्क में मैन्युअली, बिना मैन्युअली के हाउ वी कैन implement in real, right? So that's why I said that it is one of the major contributing factors to the success of open source development model is its transparency and ability to accommodate distributed collaboration among project teams. This is accomplished using communication method that are accessible, क्योंकि without discussion how you can develop the project, because when you then in paperwork, on paperwork, then after that you have to discuss कि हमें update version if you want to build, right? Then you have to discuss, you have to take meeting, then after discussion you can be able to work, because without discussion if you do individually by yourself then maybe it will be fail after building, right? Coding में कुछ problems हो सकती है किसी में भी, so discussion is must. Then this is accomplished using communication methods that are accessible to all within the project community, right? For strategy, discussion making, architecture discussions, and code reviewers. Mailing lists are one of the most commonly used communication channel because they are self documentation, transparency, and typically anyone involved in the project can participate. This includes end users who may monitoring the list of understand to understand uh, futures as they evolve or provide practical feedback. Then collaboration on implementation. After discussing, after accepting the request on demo, क्या demand चल रही है, उसके बाद हम architecture करते हैं on paper. Then we discuss about this project, right, with the help of team, with all team. Otherwise, you can say then implementation means collaboration. The open source development model place strong emphasis upon collaboration development and pre-review from first idea to final acceptance, because it evolved to support highly decentralized team where submitters were not all personally known to the maintainers. The model favors those who work with other on design and implementation while clearly communication their plans. मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब इन कोडिंग पर्पज, जब तक आपको मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर मींस फर्स्ट मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसका अपडेट वर्जन वी कैन मेक एज अ प्रोजेक्ट। देन आफ्टर पेपर वर्क के बाद, डिस्कशन के बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब पेपर वर्क मीन्स डिस्कशन के बाद किस टाइप का डिजाइनिंग चाहिए और उस डिजाइनिंग के बेस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, राइट? उसकी कोडिंग डिपेंड करती है। सो डिजाइनिंग आफ्टर डिस्कशन इट विल हैपन, राइट? Then the source code submission, that's the life cycle of new code submission. The process being with the collaborative development among subset of developers who have taken ownership for delivering the future. When the code is functional and applies against the mainline project, the project team submits the code to the project maintainers over the project mailing list. The maintainer and the other project participants may provide feedback on the submission and decline to accept it, in which case implementation team will revise the resubmit the code. Because smaller patches are easier to understand and test, submitters are generally
encouraged to submit changes in the smaller increment possible. Okay. Then testing and integration, because work may be highly distributed, the open source development model places emphasis upon detecting issues early and fixing them quickly. Many larger projects create nightly and weekly builds using the automate build suite evaluation new code as soon as possible after integration. Source code release, with the few exception, a project that use the open source model make both stable snapshot of the list release and current development tree available. This helps sure that users can retrieve the most recent stable release, while developers can work from the most current code. Release management practice vary from project to project, but most nominate an individual team to evaluate the maturity of features in the development tree and monitor QA metrics. When the release criteria are met, this team declares the release to be complete and branches the development tree. So characteristic of development model is a interwoven development cycle. The open source development model is a characteristic by what you can say the series of interwoven process, then improve the code quality, integrate of strictly in linear progress to release. Unlike the big reveal that typically accomplish traditional software development model, the open source model encourages the contribution independent future development. This enables new features to be integrated as they are ready, which is turn allow other developers to build upon the team. Then release early and often. Release early and often refers to development practice, publishing alpha code to the development community for review well in advance of the final release. This results in highly iterative development in minimize the amount of change between development and release, making and easier to diagnose. This release philosophy allows for continuous pre-review, where all members of community have opportunity to comment, and offer suggestion the bugs fixes. It also encourages small increment changes that are easier to understand and test while developers are actively engaged, rather than being discovered during a separate final test cycle. A side benefit is that code is frequently reviewed for to the coding style, and inflexible code can be found and improved early in the development cycle. Okay, in this cycle. Then pre-review. The open source development process emphasizes pre-review throughout the entire development lifecycle. Developers are expected to submit their code to project mailing list for periodic, periodic periodic or public peer review. Particularly when a feature achieves a development milestone, this helps to sure that others outside of the development team are aware of the changes and can provide feedback before the design in final and implementation complete. Other members of the open source project review the code, provide comments and feedback to improve the quality and functionality, and test to catch bugs and provide enhancement as early as possible in development cycle. When a feature is complete and ready to be considered for integration, the project maintainers also provide a level of the review prior. Just 1 minute. When feature is completed, the ready to consider for integration, the project maintenance also provide a level of review. Then by the time code is integrated into a maintained product has undergone number of details. Okay, by other outside of development team. The result is improve highly quality code. So life cycle in open source development model, we require the future request, then architecture and design discussion, then implementation, deployment,
maintenance, then patches. I said already, patches meaning is what? That is a submit by developers and users. Then contribution, test project. So for this, first of all, after initialize phase is to हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट करना है, कैसा प्रोजेक्ट करना है, उसको मैन्युअली डिजाइन करना, राइट. देन टीम के साथ डिस्कशन करना. ओके उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो भी होगा पर्टिकुलर, उसमें हमें लोगों को क्या करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द डेडलाइन कि हमें ये प्रोजेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट करना है या 6 मंथ में करना है. उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिस्कस द टीम, वी हैव टू डेवलप द टीम, और ऑन द बेस ऑफ टीम वी हैव टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट जो भी होगा. ओके सो लाइफ साइकिल में सारे प्रोजेक्ट्स के मॉडल करें, मतलब मॉडल मतलब प्रोजेक्ट, और डिप्लॉयमेंट मतलब जो भी हम लोग आफ्टर टेस्टिंग. सो इसमें बहुत सी फेजेस होती है, जिस फेजेस को हम लोगों को फेजेस के बेस पर हम लोग वी कैन मेक द प्रोजेक्ट. ओके सो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल. नाउ वी गोइंग टू सी द licensing. What is licensing? So you know very well about license, right? We have studied in my previous lectures. So licensing, what is licensing? Okay. So, license is the process of legal protect, that is trademark or copyright. We have already studied this point. Alright, if use a conjunction with product, many major companies. Licensing is a brand extensions tool and marketing that is used by everyone, right? From major corporation to smallest of small business. Licensing is a way to move a brand into new business without making a major investment in the new machinery, manufacturing process or facilities. The verb licensing or grant license means to give permission. It refers as a permission as well as a document recording that permission. A license may be granted by party called licensor to a third party called license as element of agreement between those parties. Another definition of license is authorization to use the license material, right? License पे जो भी आपको authorize होगा, means if you want to use your any software license, some license free base होता है, कोई license में pay होता है. अगर pay license आप use करते हो किसी भी software के लिए, और pay होगा, वो paid होगा, I mean, so उसके लिए you have to just pay some money and उसके बाद आप authorize हो जाते हैं उस पर, मतलब आपका ईमेल आईडी या जो भी आप यूजर देन पासवर्ड, जब तक आपका दिया भी यूजर और पासवर्ड नहीं अपडेट होता है, या अपडेट आई मीन जब तक वो आप यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देते, तब तक आपका वो लाइसेंस इट विल बी नॉट वर्क, बिकॉज जो पेड लाइसेंस होता है, राइट. सम लाइसेंस आर फ्री, सम पेड. The license may be granted by party, right? Author definition of license is an authentication. Authorization, मतलब authorize होता है, okay, to use the license material. A license may grant a license under intellectual property law to authorize or use to a license, such as copyright software or using in patent. I already discussed about license in my previous lecture in detail. So if you have seen this lecture, then you will get here well. Then business practice such as technology transfer, publication, and characteristic entire depend on the license on intellectual properties. Some of license are follow mass licensing of software. Trademark means some license are there, like first one is mass licensing, okay, mass licensing. You can say license, okay, of software. Then I'm writing like this software, okay. You have to write in full form. Then trademark means जो भी हमें symbol होता है उसको हम क्या बोलते हैं, trademark, okay. Then trademark licensing. Then artwork and characters licensing. You can say artwork. Yeah, you can say the characters licensing, okay. So this type, some types of license follows. Let's see कि इसमें
कैसे वर्क होता है. ओके, सो लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट. ट्रेडमार्क एंड मास लाइसेंसिंग. ओके, सो मास लाइसेंसिंग में क्या होता है ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज यूज बाय द इंडिविजुअल और पर्सनल. जो मास लाइसेंसिंग होती है इंडिविजुअली यूज करते हैं, पर्सनली पर्सनल कैन यूज इट पर्सनल कंप्यूटर अंडर लाइसेंसिंग. ओके, अभी हमने BSD लाइसेंस देखा, अपाची देखा, ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंडर वर्क करते हैं. आई सेड ऑलरेडी, राइट. सो ये मास लाइसेंसिंग ये वन पर्सन के वन मतलब पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है फ्रॉम द डेवलपर्स ऑफ सॉफ्टवेयर. Such licensing is typically included in more extensive end user than enter into open the installation of the software of computers. So trade and then trademark and brand licensing. Trademark या हम brand licensing कह सकते हैं इसको. Second one, that a licensors may grant permission to license to distribute product under the trademark. मतलब किस ट्रेडमार्क के अंडर ही कुछ प्रोडक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको ऐसा ग्रांट गिवन है. ओके, with such license may be used to trademark without fear of claim of trademark by the licensor. The assignment of the license often depends on specific contractual टर्म्स. मतलब ट्रेडमार्क में अभी मास मतलब ये ओपन पर्सनल कंप्यूटर में फर्स्ट वन लाइसेंस यूज होता है. ट्रेडमार्क में हमें जो भी अभी जो बिजनेस है उसका लाइसेंस निकालना पड़ता है, राइट. चाहे वो किसी टाइप का बिजनेस है और फिर उसका ट्रेडमार्क होता है, लाइक उनका लाइसेंस होता है, ट्रेडमार्क होता है. अंडर दिस वो लीगली वो वर्क होता है, दैट इज अ ट्रेडमार्क लाइसेंस. ओके, जिसमें हम लोगों को कोई भी केस बनेगा वो नहीं होता, फियर्स नहीं होता है. ओके, देन आर्ट वर्क एंड कैरेक्टर्स लाइसेंसिंग. A license may grant a permission to license to copy and distribute copyright work, such as art. Example: Tom's Kincaid's painting, then Don's in Lost Girls. Example characters are Mickey Mouse, sorry. With such license need not fear a claim of copyright. Okay. Mickey Mouse, you know very well, is having license and it's not copyright. Okay, this type some types of artwork में जो भी licensing use होता है. Okay, trademark में मतलब particular companies can use license in under means if having trademark then no one can issue sue on this a particular company, right, or a mass licensing like we are using the personal computer, right. So what is the then next is that mode of funding. In next lecture we're going to see mode of funding. Okay, mode of funding means is a funding purpose, the types of funding, then national capability, strategy of research, right. इस फंडिंग में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. देन डिस्कवरी साइंस रिस्पॉन्सिबल, देन इनोवेशन फंडिंग, देन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, देन फेलोशिप, कैपिटल फंडिंग टाइप, बहुत सारी मैनेजमेंट मोड्स. ओके, direct management, indirect management, share management. So next section में it's a big topic, big in this topic having many points. So here we will now हम लोग ये स्टॉप करते हैं यहाँ पे. वी टुडे वी हैव सीन द ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल ये और एंड लाइसेंसिंग. मास लाइसेंसिंग मींस फॉर ट्रेडमार्क मींस फॉर एन आर्ट वर्क लाइक एग्जांपल मिकी माउस. देन हम वी हैव सीन द ओपन सोर्स एंड द साइकिल ऑफ open source, right. This cycle we have seen in today's lecture. Okay, today's lecture over here. Thank you.